So hello everyone, myself Priyanka Mohite. I have secured all India rank 595 in UPSC Civil Services 2023, and I am selected into Indian Police Service, that is IPS, Maharashtra cadre. Fortunately, I have got my home cadre, and I'll join my training soon in the month of October. I'll first start with my journey of UPSC. So it started when I was in 12th standard. Basically, I have completed my basic schooling from Maharashtra, from Nasik district, and then I got selected in 6th standard in Jawahar Navodaya Vidyalaya, Khedgaon, Nashik. And when I was in 11th standard, then the thought came in my mind that I should pursue my career in civil services. And this basic thought came when my school principal from Navodaya introduced me to the field of civil services. Sir was of the opinion that Priyanka, I feel you have good command over some qualities that are required for a civil servant, and he literally pushed me to pursue my career in civil services. I completed my 11th and 12th standard from science background, CBSE, and then the thought came कि I should shift my field so that it would be convenient for me. I would get limited more amount of time to prepare for civil services. So I shifted my field from science background to arts. I pursued my graduation from Bachelor of Arts, that is in political science. Political science and international relation was my special subject. Uh, और फिर उस सब्जेक्ट को परस्यू करते करते मैंने अपना यूपीएससी का प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दिया था. फर्स्ट ईयर मेरा जो फर्स्ट ईयर था उसमें आई स्टार्टेड विद बेसिक एनसीईआरटीज रीडिंग विच इज मस्ट फॉर प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी, क्योंकि व्हाट आई फील कि एनसीईआरटीज आपको वो बेस्ट प्रोवाइड करते हैं जिसके बेसिस पे आप अपना जो फाउंडेशन है वो बिल्ड कर सकते हैं टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज. NCERTs, what you can learn from NCERTs is, I feel ki first thing from NCERTs you can learn how to develop that language that is required for answer writing, the kind of simplicity that is required in your mains answers. Another thing that is important and that is being provided by NCERTs, I feel the content. There are a lot of examples where we can see that UPSC has picked direct questions from NCERTs, especially from history and geography. So I would suggest for those who are preparing for civil services that you should go for NCERTs first. Basically 6 to 12 standards, and most importantly 11th and 12th standard NCERTs must. अनदर थिंग दैट आई वुड सजेस्ट कि एनसीईआरटीज में से आपको क्या और लर्न करना चाहिए, तो उनका जो लैंग्वेज है, द वे दे आर प्रेजेंटिंग देयर थॉट्स थ्रू एनसीईआरटीज इज इम्पॉर्टेंट. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग आई वोंट सजेस्ट कि यू शुड प्रिपेयर micro notes of every NCERT from 6 to 12, but what you can do कि you can just highlight the things that are important from NCERT. So that I have completed my basic NCERT in the first year itself. Then in the second year, what I have done, I have gone through basic coaching. I was preparing from Pune itself. There are a lot of thoughts that come into people's mind, students' mind, whether we should prepare for UPSC from our native place or we should go to Delhi. What I feel ki it's not necessary whether you should go to Delhi or you should prepare from particular place, because I feel it's not about place. It's about your level of dedication, your consistency, and your confidence. So what I thought ki I won't be able to be that much confident, or I won't be able to that much. I won't be that much comfortable in Delhi, considering the level of climate extremities that are experienced in Delhi, and on the contrary, what we experience in Maharashtra. So I decided that I'll prepare everything from Maharashtra only. So I was in Pune. In the second year of my graduation, मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था लोकल पुणे में, भगीरथ एकेडमी नाम से, और फिर वहां पे मैंने एक साल का पूरा कोचिंग लिया. आई यूज टू गो टू कोचिंग एट 8 AM in the morning and I used to end it in 6 PM. So पूरा दिन I was just consistently, it was one way process. I was just taking things how UPSC, what UPSC consists of. In fact, it was so basic that I started with the full form of UPSC. I was so clueless about UPSC, so I started with every basic minute detail. कोचिंग में जाके मैंने पहले पूरा जीएस कवर किया. मॉर्निंग शिफ्ट में उनका जीएस का कोचिंग होता था, फिर आफ्टरनून स्लॉट में
ऑप्शनल भी मैंने कवर किया था। तो पूरा 1 साल था जब मैंने अपना एंटायर प्रिपरेशन का जो जिस्ट था, फिर कोचिंग में मैंने व्हाट आई हैव डन, तो फर्स्ट थिंग मैंने पूरा सिलेबस कवर कर लिया। सेकेंड थिंग मेरा था कि सो इट एज इट वाज वन वे प्रोसेस, तो मेरा फोकस रहता था नोट्स मेकिंग पे। तो रनिंग नोट्स मैंने ज्यादा से ज्यादा बनाए थे। तो अगर आज भी मेरे को कोई बोलेगा कि प्रियंका यूपीएससी करना है, तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा, तो वो रहेगा मेरा बेसिक फाउंडेशन वाला नोट्स जो मैंने अपने कोचिंग के फर्स्ट ईयर में किया था। 1 साल का बैच मोस्टली आई वुड सजेस्ट टू गो फॉर 1 ईयर वाला बैच। द रीजन बीइंग कि 1 साल में यू कैन कवर द एंटायर सिलेबस, और उसके बाद यूपीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ स्टडी। तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंस्टेड ऑफ 3 इयर्स का इंटीग्रेटेड बैच, आई वुड सजेस्ट यू शुड गो फॉर 1 ईयर वाला बैच, क्योंकि उसमें आपको सिलेबस समझ में आता है। फिर देन यू कैन वर्क बेस्ड ऑन योर सेल्फ स्टडी। सो ऐसा मेरा सेकेंड ईयर था जब मैंने पूरा नोट्स कवर कर लिए थे, बहुत सारे रनिंग नोट्स बना लिए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरा फोकस था ऑप्शनल सब्जेक्ट पे। ऑप्शनल पे मैंने बहुत अच्छी कमांड मतलब कवर कर लिया था, पूरा ऑप्शनल के नोट्स रेडी थे, तो फिर इट वाज मोर हेल्पफुल फॉर मी। एंड फ्रॉम सेकेंड ईयर इटसेल्फ आई हैड दैट कॉन्फिडेंस कि एक बार अगर मेरा प्रीलिम्स निकल जाए तो आई हैव लॉट ऑफ कंटेंट रिगार्डिंग मेंस एंड आई कैन कवर माय मेंस in my first attempt itself. So I was that much confident based upon my notes. But what I would suggest ki while preparing your own notes, you should not go for every basic content ya fir every minute detail. It's just you should make just kind of running notes, that I would suggest. तो ऐसा मेरा सेकेंड ईयर था। एंड देन इन द थर्ड ईयर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माई सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी में क्या होता था कि व्हाट आई यूज्ड टू डू, पहले तो आई यूज्ड टू रीड माय बेसिक थिंग्स जो मैंने अपने कोचिंग में ली थी। उसके बाद आई यूज्ड टू फोकस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको यूपीएससी पास करना है तो उसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो, ये कोचिंग करो, यहाँ से अच्छा कंटेंट मिलेगा। अगर आपको बेस्ट कंटेंट चाहिए तो व्हाट यू कैन डू इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हर टॉपर ने आज तक यही चीज कही है। बहुत सारे लोग हैं जो इसको सीरियसली नहीं लेते हैं, मैंने खुद ने भी नहीं लिया था, एंड दैट्स व्हाई आई वाज नॉट एबल टू क्लियर इट इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ। मैंने पहले अटेम्प्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पूरी तरह इग्नोर किया था। तो आई वुड सजेस्ट कि यू शुड गो फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने के बाद अगेन यू नीड टू गो टू योर बेसिक नोट्स, उनको अच्छे से रिवाइज करो, एंड देन यू कैन मेक फिर उसका क्रिस्पी वाला नोट्स। तो दिस इज हाउ आई स्टार्ट, दिस इज हाउ आई हैव डन। फिर उसके बाद आई वेंट फॉर माई फर्स्ट अटेम्प्ट, और इट वॉज काइंड ऑफ मोस्ट हॉरिबल एक्सपीरियंस आई वुड सजेस्ट, क्योंकि उस एक्सपीरियंस में मेरे को पता चला कि जितना भी प्रिपरेशन मैंने किया है वो सब एकदम ओवर कॉन्फिडेंस के बेसिस पे था। यूपीएससी इज नॉट जस्ट अबाउट कंटेंट, इट्स अबाउट क्वालिटी। तो प्रीलिम्स में जाने के बाद मेरे को पता चला 2022 में आई गेव माय फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड आई वाज सो मतलब डिस्टर्ब, क्योंकि आई वाज नॉट एबल टू क्लियर इट। प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर हो पाया था, तो फिर तब मेरे को पता चला कि आई नीड टू वर्क अपॉन माय मिस्टेक्स। So most importantly, what I have learned through coachings as well as from my first experience of prelims, ki you have to find your own mistakes first and then you have to work upon them. So instead of going for lot of resources, instead of going for lot of coachings, you first have to think about your own mistakes. You need to enlist those mistakes and you need to rectify them so that it would be more convenient for you to work upon them. So first thing that I have learned from my first experience, लाइफ का पहला फेलियर था, उसके पहले हम जिंदगी में कभी फेलियर हैंडल नहीं कर पाते हैं। इवन आई वाज सो डिस्टर्ब्ड, आई वोंट से कि मैं एकदम मतलब चिल थी या फिर मैंने बहुत अच्छे से वो या फिर ग्रेसफुली अपना वो फेलियर हैंडल किया था। आई वोंट सजेस्ट दैट या फिर आई वोंट से सच थिंग। बट फिर देन आई लर्न कि अगर आप किसी भी फील्ड में जाओगे तो आपको यू नीड टू लर्न हाउ टू हैंडल द फेलियर, क्योंकि वो लाइफ का पहला फेलियर था। मैंने अपने बहुत सारे स्पीचेस में भी जो लोग भी मेरे को फॉलो करते हैं उन्होंने भी देखा होगा, मैंने भी कहा था कि उस टाइम आई वाज सो डिस्टर्ब, बट एक शायरी थी जो मेरे दिल में आई थी जो आज भी मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है। इट वाज कि कुछ देर की खामोशी है फिर से शोर होगा, और का वक्त होता है अपना तो दौर होगा। So that thought kept me motivated कि let's not think about our failure much, but let's just work upon our mistakes and अगेन फिर से हम मैदान में उतरेंगे और फिर और जोरों शोरों से पढ़ाई करेंगे। और उस सेकेंड अटेम्प्ट के बाद से जो मैंने प्रिपरेशन किया, दैट इज काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी दैट हैज वर्कड फॉर मी वेरी वेल। सो आई वुड सजेस्ट कि सो आई वुड
गो विद दैट स्ट्रैटेजी इटसेल्फ। पहले मैंने स्टार्ट किया था, पहले मैंने प्रीलिम्स से स्टार्ट करूंगी। तो प्रीलिम्स के लिए व्हाट आई कैन सजेस्ट कि नॉट एवरीथिंग यू हैव टू लर्न।